Hello students, welcome to the Industrial Management Lecturer 2. Yesterday we have discussed about what do you mean by management, what are the characteristics of management, and what are the importance of the management, and what do you mean by administrator, and what are the functions of the administrator, how we can manage it. Now there is a one person, the known is a very famous in the management, Henry Fayol. Okay, so he is having some principles of a management. So what are those? So we'll discuss one by one now. Division of work, discipline, authority and responsibility, unity of command, unity of direction, subordination of individual, interest to general interest, remuneration of a personal. So what, because systematically he managed the things here. So these are the main principles of a management and it is an important topic. The division of work, what do you mean by this? It promotes efficiency because it permits the work to be executed in a limited space of area. See, there is a work. If you divide it, if you properly divide it and you give it to some other people, so systematically, so you can complete it. So this is the one principle of the Henry Fayol. Then authority and responsibility both always go together. Authority means rights to act, decide and command. Responsibility is the obligations of a subordinate for the performance of any job allotted by that superior. See, authority, that means what? See, for example, you can take an example in an educational institute only. There are some documents. It should be signed by principal only because he is the authorized person. Right to act and decide and command because he is going to take the decision. What is his responsibility? Responsibility, it means what actually? Because if that person is heading that particular department, so he cannot run away from that, so that he has to complete that work. He cannot run away that particular problem. He should not away from that problem. He has to solve and he has to complete. So this is what the responsibility. For example, if you are writing the examination, in the main examination, so nobody can come and write your examination. So you have to write the paper. You are the responsible for the paper. And you might have seen there are a supervisor, invigilator in your room itself. He is the responsible for the 3 years. 3 hours. Now, discipline, it means obedience, application, energy and respect. Unity of command. A subordinate should take orders from only one superior. Unity of command. See, even unity you must have known because you people are playing different games. If you have a unity, so you can achieve your goal over there. So you can win that particular game. There is a captain in that particular team. So you have to follow his orders only. So this is what the unity of a command. Because you have to get the order from only one superior. अगर आप लोग गेम खेलते रहते हैं, एक आदमी एक बोलता है दूसरा एक बोलता है, so अगर आप सब लोग फॉलो किए तो so unnecessary you will be disturbed and you cannot achieve your goal over there. Unity of a direction. According to Fayol, each management objective should have only one plan. Unity of a direction, so that means what? According to this particular person Fayol, ईच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? सभी का एक ही प्लान होना चाहिए.
नहीं मैं ऐसा करूँगा, वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं, सो यू कैन नॉट रीच योर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ओवर हियर। सभी का प्लान एक ही होना चाहिए। Subordination of an individual interest to general interest. This means that the interest of the organization is important over the interest of individual. So इसका मीनिंग क्या होता है? Subordination of individual interest to general interest. The interest of organization is important over the interest of an individual. Organization जो रहता है, organization इसका इम्पोर्टेंस कैसा रहता है? इंटरेस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल का ऊपर ही रहता है। लेकिन ऐसा कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? सभी का एक ही ये होना चाहिए इंटरेस्ट, मतलब एक ही गोल पे इंटरेस्ट होना चाहिए। सो एग्जाम्पल आप लोग मैं इंडस्ट्री का ये किया तो सभी का प्रॉफिट हो गए तो वो एम्प्लॉय रहने दो, एम्प्लॉयर होने दो। अगर एम्प्लॉयर है तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, अगर उसको प्रॉफिट हो गए तो एम्प्लॉय को पेमेंट दे सकता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सभी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? वो जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। रेम्युनरेशन ऑफ अ पर्सनल पेमेंट टू वर्कर्स शुड बी फेयर एंड सम प्रॉपर मेथड शुड बी अडॉप्टेड। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल, क्योंकि आप लोग किधर भी काम करते हैं तो पेमेंट के लिए काम करते हैं। सो उधर ऐसा होना चाहिए, उधर ऐसा होना चाहिए, सभी को एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ऐसा इंक्रीमेंट अगर आप लोग सुना होगा, हाँ, इंक्रीमेंट कैसा देना चाहिए उसको पर्टिकुलर आप लोग प्रोसीजर करो। पेमेंट जो देते हैं ना, इट शुड बी अ फेयर। नहीं अगर मेरा आदमी है उसको ज़्यादा दे दो, इसको कम दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी अ फेयर इन द इंडस्ट्री। सो इससे भी आप लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते। सो दिस इज द रेम्युनरेशन ऑफ अ पर्सनल पेमेंट। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन। According to this principle, there should be a one central point in the organization which have power to control overall work. See, centralization आजकल बहुत ये हो रहा है। अभी हमारा ये कॉलेज ले लो, सो दिस इज द इंटीग्रेटेड कैंपस। इंटीग्रेटेड कैंपस का मतलब क्या है? सो वी आर नॉट रनिंग ओनली इंजीनियरिंग कॉलेज, वी आर रनिंग इंजीनियरिंग, एमबीए, आर्किटेक्चर, डिप्लोमा एंड ऑल दोज थिंग्स। सभी का एक ही ऑफिस होता है, इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं उधर। सो ऐसा नहीं होना चाहिए डिप्लोमा का एक ये और इंजीनियरिंग का और आर्किटेक्चर का। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही one from the one office there is a one point, so from that, so everything should be controlled over there. So this is what the centralization। ऐसा होने से आप लोग बहुत कुछ बचा सकते हैं इधर। स्केलर चेन फेल थिंग्स ऑफ दिस एज अ चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स। स्केलर चेन, सो ऐसा होना चाहिए, देर इज अ चेन फ्रॉम सुपीरियर टॉप टू बॉटम, ऐसा वो रैंक देना चाहिए। मतलब हर एक पोजीशन को उसका एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो हिसाब से काम किए तो अच्छा होता है। इवन इफ यू टेक इंडस्ट्रियल, सो देर इज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डीजीएम, okay, so there are some managers, then come to the shop floor. So this is what the scalar chain it is. Next principle is the order. It concern to material and social order, arrangements of things and people. Material then social order, so उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट करना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करना चाहिए। इक्विटी, नेक्स्ट प्रिंसिपल, काइंडनेस एंड जस्टिस on the part of management to create loyalty and devotion among the employees. So इसका मीनिंग क्या होता है? काइंडनेस एंड जस्टिस। सो एक कंपनी का अंदर बहुत सारा एम्प्लॉयज रहता है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए।
So this is the part of the management. This is the responsibility of the management to create a loyalty and devotion among the employees. मतलब पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए. इम्पार्शियली यू हैव टू मैनेज द पीपल ओवर देयर. अगर ऐसा हो गए तो इम्बैलेंस हो सकता है. So due to that, so there you will get so many problems you have to face over there. Stability. Efficiency can be achieved by having a stable workforce. स्टेबल होना चाहिए. सो एक दिन ज़्यादा एक दिन कम ऐसा नहीं है. सो स्टेबिलिटी यू हैव टू मेंटेन इन द इंडस्ट्री. सो नेक्स्ट, इनिशिएटिव टू हैव अ सक्सेस प्लान शुड बी वेल मेड बिफोर स्टार्टिंग द actual work. So already you know that the what do you mean by planning, because you want to get a success in your future, you should have a plan. Even you think of your life also, because I want to become an good engineer, you should have proper plan. So then accordingly, so you have to act. So this is what the initiative. Aspirate decrops. This is the principle that in union there is a strength as well as an extension of the principle of a unity of a command here. Okay, so there is a strength if you have a unity, but that unity it should be towards your proper goal. एक बार आप लोग देखते हैं यूनिटी रहता है. यूनिटी कैसा रहता है? इलीगल काम में भी रहता है. बट इट वॉट इट सेज, यूनियन देर इज अ स्ट्रेंथ. अगर यूनिटी हो गए तो बहुत सारा स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन एज वेल एज एक्सटेंशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ अ कमांड. सो इन वन सेंटेंस आई कैन टेल यू शुड हैव अ यूनिटी. दैट यूनिटी शुड टुवर्ड्स इन द ethical way it is. So these are the principles of Henry Fayol's. And this is the important topic, even exam point of view. There is a next topic, business organization. What do you mean by business organization? It can be defined as an activity in which a different people exchange something of value, whether goods or service, for mutual gain or a profit. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या रहता है? बिजनेस गुड्स का भी रहता है और सिंपल सर्विस का भी रहता है. अभी आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिए तो दिस इज द वन टाइप ऑफ सर्विस बिजनेस इट इज. गुड्स अभी आप एग्जांपल आप लोग 2 व्हीलर का ले सकते हैं और 4 व्हीलर का ले सकते हैं, और अलग अलग कंपनी भी देख सकते हैं आप लोग. सो दोज आर कॉल्ड एज अ गुड्स ऑर्गेनाइजेशन. Service organization, best example educational, even that phone service they are giving, that Airtel, Vodafone, BSNL, so they are giving the service. Even if you take an hospital, so that is also one type of a service organization. An enterprise engaged in a production and distribution of goods for a sale in market and rendering service for a price. Business includes industry, commerce and a trade. Business सिर्फ ऐसा नहीं है मैं कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, वो बिजनेस नहीं है. अभी हॉस्पिटल वो भी एक बिजनेस ही है. दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस. एक BSNL, एक एयरटेल, वो भी दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, बट दिस इज द बिजनेस. Industry means the place where raw materials are converted into finished or semi-finished products. So this is called as a industry, and this is the one type of a business organization. Then commerce relates to financial, transportation, insuring and allied activities. Trade means a process of buying and selling of a commodities. अभी आप लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस और ट्रेड मार्केट भी देख सकते हैं आप लोग. उसका शेयर आप लोग परचेज करते, देन यू सेल इट. दिस इज व्हाट द ट्रेड इट इज. देन कॉमर्स
The financial bank, so that is a फाइनेंशियल बिजनेस. ट्रांसपोर्टेशन, बस ट्रांसपोर्टेशन रहता है, वो सर्विस दे रहा है आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन का. इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरेंस आप लोग करते, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस. दीज आर ऑल कम्स अंडर द कॉमर्स. देन form of organization will be decided by considering the following factors. वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए there are some factors are there, so it is to be considered. Size and shape of business to be started, technical difficulties, market conditions, capital required to start the business and the means to collect the fund, limitations and restriction put forth by the government. अगर आपको बिजनेस करना है तो ये फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा. So you should have a deep knowledge and you have to study these factors, so then it is very easy to start your own business over there. Size and shape of the business to be started. साइज एंड शेप का मतलब क्या है, आपको क्या करना है. एक छोटा सा दुकान डालना है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. या बड़ा एक इंडस्ट्री डालना है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. साइज एंड शेप, कितना लैंड चाहिए. टेक्निकल डिफिकल्टीज, अगर आप लोगों को आपको एक 4 व्हीलर स्टार्ट करना है, सो तुमको टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या आता है, लेबर चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए. सो what type of technical problems you can face is first you understand it. And what is the marketing condition, अगर मैं 4 व्हीलर स्टार्ट किए तो सेल कर सकता हूँ क्या, नहीं मैं. सो व्हाट इज द मार्केटिंग कंडीशन, दैट यू हैव टू सर्वे इट. अगर मेरे को वो 4 व्हीलर करना है तो कितना पैसा चाहिए, दैट इज अ कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दैट बिजनेस. अगर मेरा खुद का इतना पैसा मैं डाल सकता हूँ, अदरवाइज आई हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द पब्लिक. सो दैट यू हैव टू. देन व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस. हाँ, अगर मेरे को एक इंडस्ट्री करना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. एक पर्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्री डालना है तो आप लोग बेलगाम सिटी में डाल रहे हैं, सो देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, देर इज अ limitations are there. Okay, so you have to understand the government's rules and regulations. So these are the factors you have to consider to want to start a business. What are the types of business organizations? There is a private sector, there is a public sector, and there is a joint sector. The private sector में कौन कौन सा होता है, इंडिविजुअल ओनरशिप, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, joint stock companies, cooperative organization, joint Hindu family firm. Then in the public sector में कौन सा होता है, departmental organization, public corporations, then government companies. Then in the joint sector, ownership and control shared by the private entrepreneur, state and the public. Okay, so we will discuss the different type of organizations here. That is the first one is the sole proprietorship. So what do you mean by sole proprietorship? Such type of business is owned by a single man called a proprietor of that business. मतलब अकेला आदमी जो भी इंडस्ट्री चालू करता है उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. सो देर इज नो पार्टनर, नथिंग एल्स. The businessman involves capital, employees, labor and a machine. मतलब वो जो भी कंट्रोल कर रहा है वो कैपिटल खुद का ही रहता है, एम्प्लॉय खुद का है, वो लेबर और मशीन सबको वही पेमेंट देना पड़ेगा. सो यू विल नॉट गेट द अमाउंट फ्रॉम द अदर्स ओवर हियर. सो दिस इज इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप. इन सच बिजनेस द ओनर सप्लाइज all the capital required to run the organization. He produces only with his own land, capital and labor. Therefore, owner alone enjoy the profits and suffers the losses in his business and has a unlimited freedom of action within the legal jurisdictions. So आपको समझ में आया लगता है मेरे को. प्रोप्राइटरशिप मतलब उसको प्रॉफिट हो गए तो खुद एंजॉय कर सकता है, लॉस हो गए तो खुद सफर कर सकता है. इधर जो भी डिसीजन लेना है तो खुद ले सकता है, वो डिसीजन ही हैज टू टेक
किसी का बात नहीं सुन सकता है बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ दैट. व्हाट आर द एप्लीकेशंस? In a small enterprise requiring a small capital which can be run by a single person, where the risk required is not too heavy, मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि छोटा सा कैपिटल रहता है. वेयर द मैनेजमेंट बाय वन मैन इज अ पॉसिबल. मैनेजमेंट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. सो आपको मैनेज करना है तो इंडस्ट्री में ग्रुप में होना चाहिए. इधर मैनेजमेंट अकेला आदमी है, सो वो जो भी डिसीजन ले सकता है वो खुद ले सकता है. इधर किसी का सुन भी सकता है या नहीं. ही मे नॉट रिस्पॉन्स टू अदर ऑल्सो. ही कैन टेक हिज ओन डिसीजन. What are the advantages here? Easy to form and simple to run. Owner is free from all legal restrictions. Efforts and rewards are directly related. मतलब जो भी एफर्ट करता है वो हिसाब से उसको रिवार्ड बेनिफिट मिलता है, वो डायरेक्ट उसको ही मिलेगा. ओनर हिमसेल्फ इज इन टच विद द कस्टमर. डायरेक्टली ओनर कस्टमर के ये साथ, अगर आप लोग